Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10, that is about electric power. So the SLO that we covered in this lecture is to define the electric power and its unit. Further we recognize the electric power of various electric appliances. So आज के lecture के अंदर हम अपने इन दो SLOs को cover करेंगे. So dear students, let's start the lesson with a pre-reading question. So quickly tell me that why do you think some appliances like fridge or washing machine use more electricity than the others? Very good. So the answer to this question is that either they run longer or they need more power due to high power rating. तो हमारे पास बेसिकली इसी चीज़ को, जिसमें हम किसी भी एप्लियंस की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टर्म का सहारा लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. सो वी डिफाइन दिस टर्म एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट्स. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय एनी एप्लियंस इन अ पीरियड टाइम. और अगर इसके लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करें तो हम वॉट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा द लार्जेस्ट यूनिट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हिच इज किलोवाट आवर. फर्दर हमारे पास अगर 1 वॉट को देखें तो इट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. एंड इसके अलावा अगर 1 किलोवाट आवर की बात करें तो इट इज इक्वल टू द 1000 watts. So dear students, by knowing the electric power of any appliance and the time period for which it is used, we can easily calculate the consumption of energy by using the given formula. तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को कि कितना वो इस्तेमाल हुई है, हम उसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं. तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके. सो हियर इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. वी हैव अ माइक्रोवेव दैट हैज द पावर रेटिंग ऑफ 1.2 किलोवाट आवर एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 30 minutes. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी दैट इज यूज्ड इन किलोवाट आवर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय applying the formula that we just learned? Very good. So the given data is the power of microwave, that is 1.2 kilowatt hour. The time that is used is 30 minutes. If we convert it into hours, we have 0.5 hours. Further, अगर हम इसके formula को apply करें तो we have the formula in which electrical energy used is equal to the product of electric power and time. By substituting the values and multiplying these two terms, we get the energy that is used, which is equal to 0.6 kilowatt hour. So we can say that the microwave consumes 0.6 kilowatt hours of energy each day. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको डिफरेंट एप्लियंसेस बताई गई हैं, उसके अलावा उनकी एनर्जी कंजम्पशन बताई गई है इन एन आवर. तो आपको वॉट में भी, इसके अलावा किलोवाट आवर के अंदर भी इन तमाम एप्लियंसेस का एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर दिखाया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने स्केल 10.3 को सॉल्व करेंगे, इन विच वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूजिंग किलोवाट आवर एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्किल शीट को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू लुक एट द टेबल 10.1 दैट वी जस्ट डिस्कस्ड टू सी द इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन ऑफ वेरियस हाउसहोल्ड एप्लियंसेस. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द इंटरनेट टू फाइंड आउट दीज. उसके अलावा आप इनकी मंथली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को फाइंड आउट करेंगे और उसको रिलेट करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ. आफ्टर दैट यू हैव टू डिटरमिन द मंथली कॉस्ट ऑफ दीज एप्लायंसेस बाय रेफरिंग टू योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो डियर स्टूडेंट्स, उस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आप इन स्किल शीट को सॉल्व कीजिएगा और इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा. मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली और आसानी हल कर लेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, जहां पर इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वर्कशीट यू हैव टू चूज 2 एप्लियंसेस फ्रॉम योर होम. दे कैन बी आइदर माइक्रोवेव, फ्रिज, टीवी या आयरन. किसी भी किस्म की होम एप्लियंस को आप ले सकते हैं और आप यहां पे दिए गए टेबल में उनकी पावर रेटिंग्स और उसकी टाइम यूज्ड को मेंशन कीजिए. एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन बाय द एप्लियंस. फर्दर इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन and the answer must be based on the knowledge that you learned in this lecture. मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो इंशाल्लाह अपने अगले लेसन के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.